Two safaris, hours of waiting, endless jungle trails, and just a glimpse of the orange and black stripes. But today, everything changed because what we witnessed next was beyond imagination. Our journey at Bandhavgarh has been exciting but also a test of patience. In our first safari, we just saw pug marks, alarm calls, and hope. Every turn felt like this could be the moment, but the jungle had other plans. In our second safari, we did see a tiger, just a glimpse. In our hearts, we were wishing for the sight of a tiger, not just a glimpse, but a proper sighting. Will we finally get a proper sighting? To know, stay with us. क्या बोलूँ मैं और मतलब we are chilling with a tigress. She is inside the bushes. We are sitting here waiting for her to get up. In a day 4 sightings all of a sudden. अब क्या और चाहिए लाइफ में बस कुछ चाहिए और Early morning felt calm today. We were full of anticipation. Welcome to our channel Explore Life with Sutapa. It is the day 2 of our Bandhavgarh trip and we are now starting for our day 2 safari in the morning safari at Khitoli zone. We reached the Khitoli gate. Our safari was to start at 6 am. Our safari jeep was the second one as we didn't want to miss any sighting today. Our IDs were checked at the gate and we were ready to enter the Khitoli zone. On entering the Khitoli zone, we immediately heard an alarm call. We rushed, we searched and we waited. गांव का भी एरिया लगता है। हाँ टाइग्रेस कई बार गांव की तरफ चली जाती है ऐसे चक्कर में। अच्छा अच्छा It's almost half an hour that we have been following the pug mark but we have got no sightning so far. Let's see. We were passing an area where we again heard strong alarm calls. A safari jeep had seen a leopard. Just a glimpse before it vanished into the deep forest. Nice, very nice. While we were waiting for the alarm call, we noticed a few birds around that area. A beautiful white-eye buzzard, an Asian emerald dove, and an Indian cuckoo shrike. We were now in the area of dominant male tiger D1 and her queen tigress Tara. और वो कुछ लगा भी हुआ है। 2 टाइगर चले हैं यहाँ पे। हाँ इसी साइड पे गए। हाँ वो उस साइड पे गया है लेफ्ट में। हाँ और पाँव किस तरफ है उसका? हाँ हाँ ऐसे है। 2 मेल फीमेल रहते हैं। तारा नाम की टाइग्रेस है। अच्छा तारा और उसके कब? हाँ मेल टाइगर। अच्छा इससे बताओ उससे लगा है। हाँ ऑन ही था। पास नहीं ना बैठी हूँ। तो नहीं बैठे आगे गए हैं क्या? हाँ यहाँ चले हैं तो ये रहे साइड से भी चले हैं। ओ बाबा अभी बच्चे 2 दिखे थे 2 या 3 फिर से लेकिन दोबारा दिख नहीं रहे बच्चों का। Following Tigress Tara's pug marks, we reached an area where we saw her disappear into the deep forest. It was just a glimpse. We waited there in anticipation. In case she appears again,
Let's see. Nah, Tigress Tara didn't come out. We went ahead, and in one place, some jeeps were gathered. They signaled to us. We rushed. It was Devon who was going in the jungle. Again, a glimpse before it vanished into the jungle, and here is a shot. Do we really have a luck for tigers? We were really skeptical now. Bharti ji, our guide, and Bunty ji, our driver, decided to go to the other part of the canal from where the tiger Devon has just disappeared. There is a chance that he might just show up there. We reached the other end of the canal and waited. There was no alarm call, and jeeps were gathering in that area. It was really a very tense moment. Will this be our moment? But now we were not sad anymore. We have left the sighting to the wheel of Mother Nature and God. Let's see. We saw Devon क्रॉसिंग दैट एरिया एंड वो नाले से क्रॉस किया और इस तरफ आया एंड वी गॉट अ शॉट फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम बिहाइंड. दिस इज़ D1. इससे पहले वी हैव सीन तारा सिटिंग देयर. सो वी हैव गॉट 2 टाइगर साइटिंग टिल नाउ. नाउ वी आर वेटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट nala and let's see if he comes this way. And then Bharti ji and Bunty ji suddenly decided to try the area just opposite side of where we have encountered D1. Not this canal, but just the opposite side of that. I was skeptical as all the other jeeps are also coming to this area and we were leaving. However, I trusted their instincts. They were very experienced. We left this area and rushed to the other part. And now, somehow, we were very calm, leaving everything to the blessings of Mother Nature. And then it happened right there, on the road, walking straight towards us, with no other vehicles around. A majestic tiger, head on, calm, confident, unbothered. Our hearts were racing. There were just no words, just pure awe. It wasn't just a sighting. It was a moment you feel in your soul. I have been dreaming of this moment for so long and now it's here. The way it looked at us, those eyes, that presence. For a few seconds, time just stopped. This is why we come to the jungle. This is why we have waited for so long. After 2 safaris, this moment made everything worth it. What a moment it was! We got a head-on shot of D1. It's my dream shot. We got it.
It's you can see. रोड आया और चला गया। आके जहाँ फीमेल हुई वहाँ चला गया है। Just see this. और वापस वहाँ चला गया। Just see this. हमीन को मिला रहा, फिर एक बाद उत्तम अज्जुरन को मिला, देख लिया वो फिर लौटी। Oh, it's a dream shot of mine. जहाँ हो जादू हो फिर मेल चला गया जहाँ फीमेल नहीं। Happy and jumping out of excitement, we went to have our breakfast today, which tasted even better. After having our breakfast, we went to check on other areas, and on the way, Bharti ji, our guide, found one plastic wrapper dumped on the ground. She collected it, and then Bharti ji and Bunty ji, our driver, started discussing about the ethics that is not followed by some of the tourists, which causes a great deal of problems for the forest department. Let's hear from them what they have to say. पन्नी किसी ने फेंक दिया था इसको। ये अच्छा है यहाँ इतना उनको, अब चलो ठीक है जानते नहीं, क्या देख के समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हाँ नहीं है उनके लिए बंद कर देना चाहिए इसे टूरिस्ट को। मैं तो उनको देख के भी समझ में नहीं आता कि हाँ एक पन्नी नहीं है, कचरा नहीं है, हम कहाँ फेंक रहे हैं। आदमी वैसे कुछ करना होता है तो नहीं दिखता यार, यहाँ तो बहुत क्लीन है। हम पीछे वाले से ना ऐसे राउंड लेके जैसे फिल्म में नहीं गिरते वैसे। और एक तो अभी इसी साल ही गिरे थे, मतलब पत्थर में गिरे, ऐसा लगा कि गया नहीं। सोचिए बाघ आ रहा हो और वो गिर के पूरा बाहर, क्या होगा? जबकि उसमें ना गाइड की गलती ना ड्राइवर की गलती, वो चिल्ला रहे हैं कि आप बैठ जाइए बैठ जाइए। गेस्ट भी इतने कभी हो जाते हैं, सुनता नहीं। टूरिस्ट के ऊपर अभी कभी अटैक नहीं हुआ ना यहाँ पे, मतलब नहीं ऐसा जिप्सी पे नहीं करता टाइगर कभी। देखा तो एक सामने चार्ज करता है, मोक चार्ज करता हाँ, है, वो जिप्सी अब नहीं करता। लेकिन बताई थी ना मैं कि एक रोड में फीमेल है जिसको महामन बच्ची बोलते हैं, उसके बिहेवियर की वजह से कुछ लोग उसको चबनी भी बोलते हैं, मतलब डराती है। हाँ चापने, गांव में जब काटने को कोई दौड़ता है तो नहीं कहते चापने को दौड़ता है। हाँ तो चापने पकड़ूं, हाँ पकड़िए। हाँ तो वो जैसे उसका वैसे नाम है महामन बच्ची, मेन रोड पे हाईवे पे उसका एरिया, उसके साथ बच्चे भी हैं। और जो खितौली और मगधी में मेल टाइगर जाता है डीएम, वैसे उसका नाम धमोखर मेल है, लेकिन धमोखर ने बड़ा हो जाता है ना, उसको शॉर्टकट करके डीएम बोलते हैं उसको। तो उसी का एरिया है पूरा। उसका बिहेवियर ऐसा है कि यदि वो कहीं छिप के बैठी है, अचानक से कोई निकल गया, तो चाहे वो बाइक वाला हो चाहे वो जिप्सी वाला हो, वो किसी को भी दौड़ा देगी। और दौड़ाती कैसा है कि पुल के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं और देवी जी कहाँ दौड़ रही हैं, पुल के नीचे से दौड़ा रही है। तो उसका बिहेवियर है, वो किसी को मारने के हिसाब से नहीं वो करती, लेकिन हाँ वो डरी, उसका बिहेवियर है। कोई इंसान में ही नहीं देखा कि चिड़चिड़ सा होता है, हमेशा लड़ने के लिए उतावला होता है, और कोई इतना शांत होता है। जैसे आज आपने टाइगर दे देखा कि उसको कोई लेना देना नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, क्या हो रहा है। तो सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, जैसे हमारे इंसानों में भी सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, वैसे जानवरों में भी होता है। तो उसके साथ ये है कि वो कोई भी निकल जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होता कि मैं बैठी हूँ और कौन क्रॉस करके यहाँ से जा रहा है। तो बस वो मोक चार्ज करती है गाड़ियों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि यदि अटैक के हिसाब से करें ना तो एक छलांग में ही गाड़ी के अंदर आ जाए। तो टाइगर इंसान को डराने की कोशिश करता है, दूर भगाने की कोशिश करता है कि भाई अपने हाथ पे रहो, मेरे से दूरी बना के रखो। यदि मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास तो तुम भी मेरे पास आने की कोशिश ना करो। हाँ तो थोड़ा बिहेव। हाँ We went to the area of Ra female. Ra female is a very bold tigress of the Khitoli zone at Bandhavgarh. She was with her cubs, and we met two forest officials who indicated that she is resting under the tree. We could see her resting, and we waited there in anticipation of her waking up and walking on the road or coming out of the bushes. यही पे है टाइगर, इसका नाम क्या है भैया? ये आई थिंक रा फीमेल है, अभी क्लियर दिख नहीं रही है। हाँ रा फीमेल है, अभी रेस्ट कर रही है, रात भर एक्टिविटी की होगी, ज़्यादा लाइट होने के कारण टाइगरें आके पानी के किनारे बैठ गई है। और मोस्टली टाइगर जब हार्श लाइट हो जाता है तो रेस्टिंग टाइम हो जाता है उनका, क्योंकि होल नाइट एक्टिविटी करते हैं टाइगर। डे टाइम उनका रेस्टिंग टाइम है, 5 से 6 घंटे तक टाइगर सोता है। हाँ सर दिखाई दिए। इसके 4 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं,
सॉरी, और बच्चे हो सकता है कि अगल बगल कहीं किनारे वो भी हों। क्या बोलूँ मैं, और मतलब वी आर chilling with a tigress. She is inside the bushes. We are sitting here waiting for her to get up. In a day 4 sightings all of a sudden. क्या और चाहिए लाइफ में, बस कुछ चाहिए और पेड़ के जड़ में तो यह पेड़ जो है सूखा वाला After a while, Ra female got up, peeped and warned a gypsy and went inside the jungle. This was all we could see. And here is a video from one of the tourists. In the previous day, on 2 safaris at Tala Zone, if you have seen the blog, you would know that we were dying to get a sight of a single tiger. And today, in the Khitoli zone, we had 3 to 4 sightings in a single safari, morning safari. We were overwhelmed with joy. Nature is really unpredictable. It always rewards patience just when you least expect it. If you felt the moments in the safari, don't forget to like, share and subscribe to Explore Life with Sutapa, because more jungle stories and wildlife magic is coming your way. sitting here, and there you can see there is a female sitting there. She went